વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વતનની મુલાકાતે આવ્યા છે અને 8,000 કરોડના લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરવાના છે। ત્યારે હાલમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે રીઇન્વેસ્ટ એટલે કે રિન્યુએબલ એનર્જી ઇન્વેસ્ટ જે સમિટનું આયોજન મહાત્મા મંદિર ખાતે કરવામાં આવ્યું છે, ત્યાં તેનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે। રિન્યુએબલ એનર્જી કે જેનો ઉલ્લેખ આપણા શાસ્ત્રોમાં પણ કરવામાં આવ્યો છે। 5,000 વર્ષ જૂના શાસ્ત્રોમાં જે આયુર્વેદમાં આખું લખવામાં આવ્યું છે, તેમાં ખાસ કરીને આ વાત કરવામાં આવી છે કે સૂર્યની ઉર્જાથી જે આપણે ઉર્જા પ્રાપ્ત કરીએ છીએ, જેના કારણે વીજળી ઉત્પન્ન થાય છે અને આ વીજળીનું રીઇન્વેસ્ટ એટલે કે રિન્યુએબલ એ વીજળીનું ફરી એક વખત એનું ઉત્પાદન કરવું, જેને રિન્યુએબલ એનર્જી કહેવામાં આવે છે અને તેમાં ઘણા બધા દેશો જે છે એ ભાગ લઈ ચૂક્યા છે। ત્યારે હાલમાં ભારતમાં અને ખાસ કરીને મહાત્મા મંદિર ખાતે એક નવી સિસ્ટમ જે રિન્યુએબલ એનર્જી સમિટ આ મળી છે, જે સમિટમાં રિન્યુએબલ એનર્જી કઈ રીતે ઉત્પન્ન કરી શકાય, સાથે સાથે તે દેશ માટે આખા વિશ્વ માટે કઈ રીતે ફાયદાકારક થઈ શકે, તે સમિટનું શરૂઆત કરવામાં આવી રહી છે। રિન્યુએબલ એનર્જી એક્ઝિબિશનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં અલગ અલગ દેશોના પ્રતિનિધિ મંડળ પણ ક્યાંક જોડાયા છે। હાલમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ તેનું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે। આ સમિટમાં અલગ અલગ દેશો ભાગ લઈ રહ્યા છે અને મહાત્મા મંદિરમાં રિન્યુએબલ એનર્જી ઇન્વેસ્ટનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે। ખાસ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દીર્ઘદ્રષ્ટા નેતા છે અને તેમણે ખાસ એક વિઝન જોયું છે કે કઈ રીતે ભારત દેશને દરેક ક્ષેત્રે આગળ વધારી શકાય, કઈ રીતે ભારત દેશ જે છે અલગ અલગ ક્ષેત્રમાં સફળતા હાંસલ કરી શકે। તેના જ ભાગરૂપે લોકો સોલાર પેનલ પ્રત્યે ખાસ પ્રોત્સાહિત થાય, કારણ કે અત્યાર સુધી આપણે જોઈએ છીએ કે અલગ અલગ ઘરોમાં ક્યાંક વીજળીની બચતના ભાગરૂપે સોલાર પેનલ તો લગાવવામાં આવી છે, પરંતુ લોકો હજી પણ પ્રોત્સાહિત થાય તે માટે તેમણે વાવોલની એક સોસાયટીની મુલાકાત લીધી હતી, તે પરિવારો સાથે વાતચીત કરી હતી કે તેમને કેટલા ફાયદા થઈ રહ્યા છે। સાથે હવે રિન્યુએબલ એનર્જીના ઇન્વેસ્ટમેન્ટના ભાગરૂપે હવે આ સમિટનું ઉદ્ઘાટન તેમના હસ્તે કરવામાં આવ્યું છે કે જ્યાં અલગ અલગ દેશોના પ્રતિનિધિઓ પણ જોડાયા છે અને ખાસ એક આખી ડોક્યુમેન્ટરી તૈયાર કરવામાં આવી છે, કારણ કે ભલે અત્યારે તેનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હોય, પરંતુ વર્ષો પહેલા કહેવાય ને કે જેનું સ્વપ્ન જોવામાં આવ્યું હતું કે આગામી સમયમાં એનર્જીને, કારણ કે સંસ્કૃતમાં આપ જોઈ રહ્યા છો કે આખો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે કે કઈ રીતે સૂર્યના પ્રકાશથી આપણે ઉર્જાનું ઉત્પાદન કરી શકીએ છીએ અને એ જે ઉત્પાદન થાય છે તેને ફરી વખત ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ અને ખાસ કઈ રીતે અલગ અલગ ક્ષેત્રે તેને આગળ વધારી શકાય છે। આખી ડોક્યુમેન્ટરી તૈયાર કરવામાં આવી છે। આ રિન્યુએબલ એનર્જી રીઇન્વેસ્ટની જે સમિટ છે તેનો પ્રારંભ થઈ ચૂક્યો છે। ચીફ મિનિસ્ટર્સ ઓફ ધ સ્ટેટ્સ, અધર મિનિસ્ટર્સ ફ્રોમ ઇન્ડિયા and those joining us from the other countries, investors, stakeholders and media friends. We are here today at the 4th edition of Global Renewable Energy Investor Meet and Expo, celebrating the clean and re-energizing power of renewables. The visionary leader who has propelled India to a leading position in global renewable energy sector, whose leadership has been pivotal in achieving India's renewable energy goals, is Prime Minister Shri Narendra Modi ji. It is my honor to welcome him today at this event. PM Modi ji is the driving force behind this transformation, showing both courage and innovation in conceptualizing and realizing our nation's renewable energy ambitions. India is a global leader in RE because of the Prime Minister Modi's vision. Today, India is not only the 5th largest, but also the world's fastest growing economies. The growth is driving an unprecedented demand for the energy. And we are committed to meeting this demand sustainably. This progress is a result of the leader's vision
and the bold determination to run that vision into reality. Prime Minister Modi ji gave this sector path and direction, scale and skill, courage and conviction, passion and purpose. And let me explain the passion and the purpose in RE sector with the shloka in Rig Veda. Atmano mokshartham jagad hitaya cha. It means वयुक्ति के लिए मोक्ष. अंग्रेजी में बोलना है तो it means for the own liberation, for the welfare of the world. Despite having one of the lowest per capita emission in the world, India is championing the cause of clean energy under the Pradhan Mantri's leadership. This is for the benefit of the world because we truly believe in Vasudhaiva Kutumbakam. The world is one family. As the Chief Minister of Gujarat, Modi ji played a pivotal role in advancing the renewable energy. Under his guidance, Gujarat emerged as a front runner in green energy sectors. Upon becoming the Prime Minister of India, he has made it into a global mission of creating a cleaner and more sustainable world. And PM Modi ji achieved this by making use of ancient wisdom. युगो पुराना का ज्ञान केवल एक युग पुरुष ही समझ सकता है. Bhagwan Shri Krishna taught us the conservation of environment through Govardhan Puja, and Chanakya's Arthashastra advocates penalizing those who harm the nature. The Rig Veda says that life is rooted in Panchabhuta, 5 elements of the nature, and it is our duty to conserve them. Hymns are dedicated to the sun. Gayatri Mantra is dedicated to Savitri, a solar god. Even today, crores of Indians start their day with Gayatri Mantra and Surya Namaskar. Surya, Vayu and Varuna are the custodians of our energy. Similarly, Rishi Agastya wrote the method of producing the Udana Vayu, that is hydrogen, in his book Agastya Samhita. Written thousands years ago, it explains how to construct an electric battery to split water into hydrogen and oxygen. Our profound respect for the nature continues to guide our modern role in pioneering the global energy sustainability efforts. Under Prime Minister Shri Narendra Modi ji, India has made significant strides in the renewable sector. Installed RE capacity has increased from 75.5 gigawatt in 2014 to 2008 gigawatt, which is growth of 175%. Total RE generation increased from 193.50 billion units to 360 billion units, of the growth of 86%. International Solar Alliance launched and has more than 100 signatories countries. India achieved the most targets of the Nationally Determined Contribution, NDC, well in advance. 40% of the power installed capacity from the non-fossil fuel-based energy sources achieved in 2021, 9 years ahead, reduced the emission intensity of India's GDP by 33% in 2019, 11 years before the target. India's solar energy capacity has increased 33 times with PM Suryaghar Muft Bijli Yojana. Prime Minister Modi ji initiated one of the world's largest schemes in the renewable energy. More than 3.5 lakh people have been benefited from this scheme. This morning only, Modi ji interacted
with the beneficiaries of PM Surya Ghar. We have received overwhelming commitment from the states and UTs as well as developers, manufacturers, financial institutes to support our goal of 500 gigawatt by 2030. Developers have committed additional 570 gigawatt, total 570, we are already having 200 plus. Manufacturers have committed additional manufacturing capacities of 340 gigawatt of solar modules, for which we have given PLI. 240 gigawatt in solar cell, that also we have given PLI. 22 gigawatt in wind turbines. 10 gigawatt in electrolyzers. And banks and financial institutions have committed to an additional $386 billion, that is in Indian rupees, 32.45 lakh crore of financing by 2030. This is the speed, scale, and scope with which New India is moving towards its vision, Vikasit Bharat. Decades ago, our freedom fighters defended our land with valor. Today, Prime Minister Modi ji has channeled the same spirit into this battle against the climate change. Today, our weapons are wielded with the solar panels powered by the wind turbines. I invite all stakeholders to invest in India's vibrant and rapidly growing RE sector. Together, let us turn this vision into reality and harness the immense potential that India offers. Once again, I welcome you all. Especially, I welcome Honorable Prime Minister, who is the inspirational force behind all this. Thank you. Dhanyavad. Jai Hind. Thank you very much, Honorable Minister, for sharing your thoughts on the occasion. We thank you for establishing the context of RE Invest 2024 and for rendering the welcome address. Ladies and gentlemen, I now take the privilege of requesting the Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel ji, to please address the gathering. विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, आधुनिक भारत के स्वप्नद्रष्टा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब, गुजरात के सम्माननीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, भारत सरकार के न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड कंज्यूमर्स अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर श्री प्रहलाद जोशी जी, भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री तथा प्रदेश के अध्यक्ष श्री CR पाटिल जी, भारत सरकार के न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड पावर मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री श्रीपाद नायक जी, आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, गोवा के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत जी, डेनमार्क के इंडस्ट्रीज मिनिस्टर श्री मार्टिन बोर्स्को, जर्मन के मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी, कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट सुश्री श्रेन्या सुलजे, विश्व के विविध राष्ट्रों तथा देश के विभिन्न राज्यों से यहां पधारे हुए सभी महानुभाव, प्रेस मीडिया के मित्र, भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी का गुजरात की धरती पर इन्वेस्ट, इनोवेट एंड इंस्पायर की थीम पर आयोजित 4th RE इन्वेस्टमेंट समिट के अवसर पर हार्दिक स्वागत और अभिवादन करता हूं। हमारा सौभाग्य है कि हमें प्रधानमंत्री जी के रूप में ऐसे विजनरी लीडर मिले हैं जो हमेशा समय के 2 कदम आगे की ही सोच रखते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में
आदरणीय श्री नरेंद्र भाई ने राज्य के विकास की नींव जल शक्ति, जनशक्ति, ऊर्जा शक्ति, ज्ञान शक्ति और रक्षा शक्ति के विजन के साथ रखी थी। जब विश्व में क्लाइमेट चेंज को लेकर सिर्फ बातें हो रही थी, तब उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर देश का पहला क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट शुरू किया था। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में ही गुजरात के चारणका में देश के पहले सोलर प्लांट की स्थापना कर दी थी। गुजरात का मोढेरा विलेज प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश का पहला सोलर विलेज बना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई के मार्गदर्शन में गुजरात रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एक लीडिंग स्टेट रहा है। उनकी प्रेरणा से गुजरात देश में विंड एनर्जी प्रोडक्शन में पहला और सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में दूसरे स्थान पर है। कच्छ के खावड़ा में 30 गीगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी का सोलर विंड हाइब्रिड एनर्जी पार्क तेजी से विकसित हो रहा है। राज्य में 50,000 से अधिक मेगावाट इंस्टॉल एनर्जी कैपेसिटी में रिन्यूएबल एनर्जी का योगदान 54% का है। सोलर रूफटॉप इंस्टॉल में गुजरात देश में सबसे आगे है। गुजरात की रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी तथा ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी ग्रीन फ्यूचर के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाती है। इस प्रतिबद्धता को चरितार्थ करने की दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में वाइब्रेंट समिट 2024 में राज्य के महत्वाकांक्षी ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की घोषणा भी की गई है। हमारा लक्ष्य 3 MMTPA उत्पादन का है, जिसके माध्यम से गुजरात ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन का भी हब बनेगा। गुजरात के पास देश का सबसे लंबा समुद्र तट है। राज्य के इस समुद्र तट पर 32 से 35 गीगावाट ऑफशोर विंड एनर्जी उत्पादन की संभावना है। इतना ही नहीं, हमें ऊर्जा संग्रहण के भारत सरकार के ध्येय को परिपूर्ण करने के लिए गुजरात में 50 स्पॉट आइडेंटिफाई कर लिया है, जहां पंप हाइड्रो स्टोरेज के प्रोजेक्ट की संभावना है। गुजरात में मौजूदा विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक फैसिलिटीज तथा बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसी के कारण आज देश में ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए गुजरात मोस्ट प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बन गया है। प्रधानमंत्री जी के दूरंदेशी मार्गदर्शन में भारत अब ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, ऑफशोर विंड एनर्जी और एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन के माध्यम से 2017 तक 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल करने की और मजबूती से आगे बढ़ रहा है। देश का ग्रोथ इंजन गुजरात हमेशा प्रधानमंत्री जी के विजन और लक्ष्य को साकार करने में अग्रसर रहा है। प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए 2070 तक नेट जीरो और 2030 तक मिशन 100 गीगावाट की लक्ष्य पूर्ति में गुजरात भी अपना अग्रिम योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। रिन्यूएबल एनर्जी का लाभ देश के गरीब मध्यम वर्ग को मिले, इस पर भी प्रधानमंत्री जी ने ध्यान दिया है। देश का गरीब मध्यम वर्ग भी सौर ऊर्जा ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा बने, इस उद्देश्य से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लागू किया है। इस योजना में पूरे देश में गुजरात 50% से ज्यादा का योगदान दे रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की आजादी की शताब्दी 2047 तक ऊर्जा आत्मनिर्भरता का विजन दिया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के कार्य मंत्र के साथ हम एनर्जी क्षेत्र में आत्मनिर्भर के लिए रिन्यूएबल एनर्जी एफोर्डेबल, एक्सेसिबल और स्केलेबल बना सकते हैं। आइए हम सब साथ मिलकर एक ग्रीन, सस्टेनेबल और उज्जवल भविष्य के निर्माण में सहयोग दें। एक बार फिर गुजरात में इस समिट के आयोजन के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी तथा भारत सरकार का आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय जय गरवी गुजरात। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपके प्रेरणादायक संबोधन के लिए हम आपके आभारी हैं। वी थैंक यू फॉर योर कंपेलिंग रिमार्क्स
and insightful address, Honorable Chief Minister of Gujarat. Thank you, sir. देवियों और सज्जनों, आज भारत के लिए स्वच्छ ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा और हरित भविष्य की दिशा में एक ऐतिहासिक दिन है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा परिकल्पित क्रांतिकारी योजना पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना देश की ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के तहत देश भर में 1 करोड़ घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर लगाने का लक्ष्य है। पिछले 6 महीने में प्रधानमंत्री जी द्वारा नियमित उत्साहवर्धन के कारण अब तक 1 करोड़ 30 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और 3,50,000 घरों में रूफटॉप सोलर लगाए जा चुके हैं और इन परिवारों तक स्वच्छ और सस्ती बिजली एवं अतिरिक्त आमदनी पहुंच रही है। हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां हमारी बिजली की जरूरत सूर्य की ऊर्जा से पूरी होगी। यह योजना भारत की ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और स्वच्छ ऊर्जा के प्रति हमारे संकल्प का प्रतीक है। देवियों और सज्जनों, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह कर रही हूं कि वे इस महत्वपूर्ण योजना को बटन दबाकर देश को समर्पित करें। हर घर पर छत हो और हर छत पर सूरज का पहरा, छट जाए अंधेरा फिर फैला जो गहरा हो। सूर्य की अपार शक्ति को प्रेरणा बना भारत आज अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में एक वैश्विक बदलाव की नींव रख रहा है। आज अगर देश सौर ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है तो इसका आधार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता एवं दृढ़ संकल्प है। आत्मनिर्भर ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसके तहत सरकार की तैयारी हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का इंतजाम करने की है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 75,000 करोड़ रुपए के प्रावधान से 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाकर देशवासियों को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। నా పేరు కె రాజశేఖర్. ఇంతకు ముందు కంటే ఇప్పుడు మాకు చాలా బిల్లు తక్కువ వస్తున్నది. ఈ యొక్క సోలార్ ప్యానెల్ ఇన్స్టాలేషన్ మాకు చాలా ఈజీగా ఉంది. లైఫ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లాగా కాబట్టి